जय जगन्नाथ पिला माने आज आम 12th रो फर्स्ट चैप्टर किंतु तुम बोर्ड रे नाही जेई आउ नीट पई एटा डेफिनेटली दरकार सेहिथि पई आज आम पढ़बा सॉलिड स्टेट तुम केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 12th गैसेस एंड लिक्विड तो तुम पढ़ी सारछ फर्स्ट ईयर रे एटा तुम सेकंड ईयर रे चैप्टर तो चलो स्टार्ट करवा तो ए चैप्टर रु ना फर्स्ट मन रखो 1 ରୁ 2 क्वेश्चन वेटेज रहबो theoretically both soft numerical आसबा हार्ड न्यूमेरिकल आसबानी तम जेई और नीट रे मोस्ट पेपर एडवांस रे जेई पिलांक पाई और सेथरे भी बहुत सारा हार्ड आसबने और जो मैंने आगु को जाओच स्पेशल करिबो केमिस्ट्री रे फिजिक्स रे सेमान को एटा बहुत भल से आसबा दरकार तमरा सेमिस्टर रे तमरा आईआईटी जाम गेट ए सब रे भी ई चैप्टर बहुत अधिक ही वेटेज रखे तो 12th में माने आको भल से मने रख एटा तम फ्यूचर पाई भास्ट इंपोर्टेंट तो चलो स्टार्ट करवा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तमें जानछ पार्टिकल भितर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थाए से मैंने एकाठी रही था जमीती कि तुम गैसेस और लिक्विड स्टेट रे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एते हाई न थाए किंतु सॉलिड स्टेट रे बहुत हाई थाए से आर पार्टिकल केवल गोटे ही मूव देखि पारे सेटा होचे ऑसिलेशन से केवल ऑसिलेट करे ता मेन पोजीशन ने से फ्लो कर पारिबनी से ताको फ्लूइड कहा गलानी आ पाखरे एबिलिटी नाही फ्लो होबा पाए ओके state of matter depend on net effect of two opposing factors intermolecular forces thermal energy tend to keep them apart okay at sufficient low temperature thermal energy is very low thermal energy jete low hobo तम काइनेटिक एनर्जी सेते कम होबो पार्टिकल्स भीतर आ जते कम होबो से माने सेते कम ही वाइब्रेट करबे हला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कम वाइब्रेट करबे माने से माने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भीतर बहुत अधिक रहबे माने से माने सेते टाण हेकी रहबे एकाथरे के सेति बांधी हेकी रहबे हला द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स भलसे मन रख आम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ुने आम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स पढ़ुचे तो कौन दे हैव डेफिनेट मास पाखे डेफिनेट मास थाए डेफिनेट वॉल्यूम थाए से मैंने गोटे डेफिनेट वॉल्यूम रे थांती तांकर हाइट जेतिकी बेस जेतिकी लेंथ सेतिकी ही थिबो जहाँ भी थिबो सेतिकी ही थिबो फिक्स्ड अमाउंट रे रहबो जे पर्यंत तमे ताको भांगी न किछि करन तो सेप भी समान थाए अच्छा सेप कथा कहीं कहला तुम को कॉन्प्रेस कर पारे कॉन्प्रेस जदि करबे ना से पूरा डिफॉर्म हो जिवो से भांगी जिवो किंतु बेलून तुम वाटर बैग को तुम कॉन्प्रेस कर पारिबो तुम ताको चिपी पारिबो जहाँ भी कर पारिबो सी तार डेफिनेट सेप न था ग्लास को ढालिबो से ग्लास रो सेप नबो ये सेमती हबनी आ पाखरे गोटे डेफिनेट इटा सेप रे ही रहिबो ता सेप चेंज करिवनी जहाँ भी सब निज निज सेप रे ही रहबे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट एज वेरी शॉर्ट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग से बहुत शॉर्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग भी थाए से मैंने मूव कर पारंतनी जेहेतु से परस्पर से मूव कर पारंतनी से फ्लो भी कर पारंतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स एटम हे पारे गोल्ड एटम हे पारे मॉलिक्यूल्स हे पारे वाटर नो आइस रे वाटर H2O मॉलिक्यूल हे पारे आयन्स NaCl हे पारे ओके की डिटेल्स दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन जोटा कि तुमको आगुरु कही सारी से माने फ्लो कर पारिबेनी से माने फ्लूइड नुहंती दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड से माने बहुत ही रिजिड बहुत टाण से डिफॉर्म करिपरिबनी से माने डिफॉर्म जो पॉइंट रे करिबो ना से सीधा भांगी जिवो ता डिफॉर्मेशन रे से ब्रेक हे जाए से लिक्विड भले नुह जे से आउ कहार सेप नब ये ता निज सेप रे ही थाए एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स सॉलिड को ना क्लासिफाई करा है
सेमानक सजावट अनुसार जमती से डेकोर कराई से हिसाब से तांकर दुईटा क्लासिफिकेशन कराई मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड आको ट्रू सॉलिड कहते आको स्यूडो सॉलिड कहते दिस इज नॉट ट्रू सॉलिड ओके कहीं ग्लास प्लास्टिक ए सब ना गोटे गोटे अमरफस सॉलिड स्यूडो सॉलिड एमाने ट्रू सॉलिड नुहंती कौन पाई जदि तुम ताको गरम करवा ना से गोटे पोजिशन आसिकी तरलिबा को आरंभ करेंगे आर गोटे शार्प मेल्टिंग पॉइंट थाए जमती आइस 0 डिग्री पर से वाटर हवा को लगे परफेक्ट 0 डिग्री रे से निजर स्टेबिलिटी बनब तुम इक्विलिब्रियम पोजिशन रे ताठू ऊपर गला से आंकर सेमती न था ये ग्राजुअली लिक्विड रे कन्वर्ट हम ग्राजुअली फिक्स मीन नियरली फिक्स लिमिटेड सेमती किसी न था यार ग्राजुअली ये लिक्विड रे कन्वर्ट हो जाए ये तरल जाए जमती ग्लास तुम ग्लास हो गला तुम रबर हो गला गोटे ग्लास को तुम गरम करवा से एठू फाटिबो गोटे ग्लास को गरम करवा से एठू फाटिबो काहेकि कारण तांकर इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग शेप रे रही तांकर सेम शेप रे ही नहीं सब अलग अलग शेप रे अछि ये भी गोटे एग्जांपल हे परबो तो आमको एटा आमर मेनली सिलेबस रे एते नहीं एटा को नहीं आम आग को बढ़िबा ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल्स था क्रिस्टल कौन गोटे स्मॉल यूनिट जोटा कि पूरा होल बॉडी रे ना रिपीट हे जाइथिबो ओके ओके crystalline solid or the true solids consist of a large number of small crystals, each having a definite characteristic of geometrical shape. Long range order, the arrangement of particle is in the order of respective 3D. A regular pattern repeats periodically over the entire crystal. Okay. Example: sodium chloride, quartz. Okay. स्यूडो क्वार्ट्ज भी अच्छी जोटा कि नुहे डायमंड जिंक सल्फाइड मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलीमर प्लास्टिक एगुड़ाक तुम आसब अमरफस से तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड नुहंती आर आगू जाके एनिमेशन देखा जो कि तुमको जान सॉलिड स्टेट सब इंपोर्टेंट जदि कोटा होना से तुम विजुअलाइजिंग पावर जदि विजुअलाइज कर पार ना तुम बहुत ही हैरान हम तो आम आगू गले कौन देखा एनिमेशन देखा ओके एटा मु हाइलाइट करछि फर्दर जेमती तुम भलसार एग्जांपल ना मन रख पारबो आर एग्जांपल गुड़ाक तुमको केबे भी दरकार पड़ पारे ओके अमरफस सॉलिड और स्यूडो सॉलिड आर प्रॉपर अच्छा ये ग्रीक फॉर अमोरफस रशिया ना मैंने कौन फॉर्म ना गोटे रेगुलर पैटर्न ना ये भितर केत भी खेचड़ी देखिछ खेचड़ी टिके आसला तुम डाली बड़े आसला चाउल बड़े आसला तुम टिके टिके किसी ड्राई फ्रुट्स पकईच सी भी बड़े आसला के लवंग बड़े आसला बहुत बहुत अलग अलग टाइम रे आसे ये सही टाइप जिनस कौटा अमरफस सॉलिड रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न्स आर ऑब्जर्व थ्रू शॉर्ट रेंज तो आम यहाँ कहीपर आम जो स्मॉल ब्लॉक को देखुचे ना से आगु को ही सेमती ही प्रोसीड करम से कहीपरानी से डिफरेंट डिफरेंट देख जो यूनिट एठी अच्छी से यूनिट कौन एठी अच्छी नो तो से सेम रे चलुनी क्रिस्टलाइन आर सब बड़े डिफरेंस ही यहाँ क्रिस्टलाइन सेम यूनिट रिपीट होता है सेम यूनिट रिपीट होनी Same arrangements between these patches are highly disordered माने आइसोट्रॉपिक रूल को मानती माने कह गले चारिआडू ही अजीब अजीब सजीब अच्छा आ जोटा आमर क्रिस्टलाइन रहा से एनाइसोट्रॉपिक को मानती जमती कि धर एग्जांपल मत नेक्स्ट स्लाइड को जीवा दियो सपोज ये NaCl NaCl एटी थी NaCl NaCl एपटू देख Na आसपट देख Cl आपर Na तो से चेंज ही चलती और तो तार
प्रॉपर्टीज चेंज हो जे आगे एन के सीएल आसपट डायरेक्शन बारंबार एन ही आसूँ से ये एनाइसोट्रॉपिक को मानुची आ जो एमोर्फस से आइसोट्रॉपिक को ही मानुची ओके এটা হচ্ছে তোমার কোয়ার্টজ গ্লাস পলিমর পিভিসি প্লাস্টিক রबर ए सबू तुम हूँ एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स आपको सबुबले मन रखुव कारण ये बहुत टाइम चॉइस करने पकाए जे ये जो एग्जांपल रहा ये भितर देखिए आमको कहे कोटा तुम एमोर्फस कोटा तुम क्रिस्टलाइन ओके तापर तुम आसला मेल्टिंग बिहेवियर एंड मोस्ट इम्पोर्टाट द जे पर्सपेक्टिव बिहेवियर जे तार जे रे क्वेश्चन बिहेवियर केमती रोचे फर्स्ट एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट जोटा कि तुम कही सारी से गोटे पीरियड ऑफ टेम्परेचर भितर रेंज ऑफ टेम्परेचर भितर से लिक्विड को कन्वर्ट हुए फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट आउ से बोहिबा को स्टार्ट करे से कौन कहते रेंज ऑफ टेम्परेचर एमोर्फस आपको कहे सुपर कूल्ड liquids okay amorphous is also known as super cool liquids or pseudo solids okay बुझो they like liquids they have a tendency to flow through very slowly से flow कर पर अच्छा ठीक है real world example glass object from ancient civilization become thicker at the bottom and sometimes appear milky बहुत वर्ष तले जो आम ग्लास यूज होता बहुत एज हो सारा से ग्लास को से बहुत थर खरा सही सारी से बहुत थर बहुत सारा टेम्परेचर चेंज सही सारी से धीरे धीरे फ्लो कर तल आड़ को बिकज ऑफ ग्राविटी से तल आड़े ना लिटिल बिट ऑफ थिकर हो ओके ग्लास इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड सुपरकूल सॉलिड और नो सुपरकूल लिक्विड्स और द pseudo solids okay anisotropy in crystalline solid आम ये आगुरी डिस्कस कर सारी मुझे तुमको कह सारी anisotropy कौन आइसोट्रॉपिक कौन आइसोट्रॉपिक माने चारियाडे सेम ही बिहेव करथियो एठी जदी मैच करनी सेठी भी मैच करनी आंकर कौन एठी गोटे अछि सेठी आ गोटे ब्लॉक अछि एठी आ गोटे ब्लॉक अछि सेठी आ गोटे ब्लॉक अछि त डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रो से चेंज ही जाउछि आ से सब डायरेक्शन रे अजीब अछि से अजीब ही अछि Direction A, anisotropic kahara in crystalline solids, isotropic kahara in amorphous solids. In direction A, suppose blue is Na, red is Cl crystal. तो ये सब देख Na अच्छी कि एपट देख से Na Cl एमती कर ये Na सेम डायरेक्शन से सेम ही देखा जाऊँ दैट्स व्हाई आम आपको कहूचे anisotropy crystalline solids आगो जो इन डेप्थ लर्निंग करबो सेतले ब्रैक्स डिफ्रैक्शन ए सब हमको आगो जाके पढ़ेबा को पड़ो जो कि आम इन डिटेल व्यू नबा जे कम पे एमते हला डायरेक्शन चेंज रे ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाउची सबटु बड़ anisotropy रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाउची डायरेक्शन वाइज ओके फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स so different value when measured along different angles or different side okay why do different arrangement of particle along different direction आर भी गोटे रीजन अच्छी चलो लुक एट पाथ सी डी जोटा कि आम देखले सी डी रे गोटे अच्छी लुक एट पाथ ए बी अलग अच्छी सबू रो रे अलग अलग अच्छी जितेबाला लाइट गोटे लाइन थ्रू रे कर से लाइन किसी बिहेवियर रही जोटा कि ए बी पाथ थ्रू डिफरेंट से तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी चेंज हो जाए से एन आइसोट्रॉपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपी कोठू पाइले आम आइसोट्रॉपी पाइले आम एमोर्फस रु चलो आबे नेक्स्ट भी देखिबा isotropy and the polycrystalline trap. Isotropy, amorphous solid properties, refractive index, mechanical strength, it changes throughout the different direction. Same in all the direction in case of
Amorphous is just opposite of the crystalline solids. Reason, no long range order. आंकर किसी long range order ही नहीं. Randomness make all direction equivalent over. से केतबे एठी बेसी ट्रैफिक रही जाउची तापरे से गाड़ी पुणी स्पीड ही जाउची सेपट रोड केतबे फास्ट फांका ही जाउची तापरे केतबे बेसी लोक रही जाउचन से सेमती ही फाइनली जते मीन एवरेज करा ना चारियाडे सेम ही रहबो. ओके जेमती सेपटे खाली गोटे पटे एनएसएल अच्छी सीएल माने एनए अच्छी सीएल ना ही नहीं आ गोटे पटे खाली सीएल अच्छी आ गोटे पटे एनएसएल मिसी मिसी अच्छन एठी सेमती नहीं ऑल एंड ओवरऑल सब सेम ही हो जाए. ओके जे एडवांस स्टाफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके एबे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड पॉली तो किसी पॉलीमर टाइप लगुच. चलो देखिए सॉलिड्स दैट अपीयर amorphous microscopically but have microcrystalline structure like metals. They catch individual microcrystals are anisotropic. But because they randomly oriented, the bulk sample appear isotropic. Okay, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଦେଖୁଛ ନା ତମେ କେବଳ ତାର ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲକ୍ ହିସାବରେ ପୁରା ମିଶିକି ଅଛି ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିବ ଆଇସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ନେଚର ବିହେଭ୍ କରିବ କାରଣ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମରଫସ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ବିହେଭ୍ କଲା ତା ବଲ୍କ ମିଶିଗଲା. And then crystalline versus amorphous ए डिफरेंस टा मन रखिबा निहाती दरकार. ओके shape definite characteristic geometry, amorphous irregular shape, melting point sharp आरो sharp अछि नो soft and over a range ये गोटे range रे जागी liquid हे जाय. Split into two pieces with smooth painless surface, cuts into two pieces with irregular surface. ये पूरा smooth surface रे ही आसी जीवो ये केंदा आसीबनी. Definite and characteristic not definite. Heat fusion heat केतबे कोठिया को केमते दका ये सब different आकर तो देखिलो टेम्परेचर पे अलग अलग हे जाउची. That's why directional nature and isotropic direction independent. ये डायरेक्शन डिपेंडेंट. नेचर ट्रू सॉलिड सुपर लिक्विड pseudo solid. लॉन्ग रेंज ऑर्डर शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एथे जानिबा निहाती दरकार. तो आको चारि प्रकार कैटेगराइज कराई छै. फर्स्ट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट. फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एथरे कोन मॉलिक्यूल्स अछि. तापर आयनिक सॉलिड आयन आर द मॉलिक्यूल विथ द वन इज द मेटल एटम. ओके मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट नेटवर्क्स. कोवेलेंट नेटवर्क्स ओनली फॉर द कार्बन जेमति कि तमरा हे गला हमर बकमिनिस्टर फुलरिन आ तमरा हे गला हमर डायमंड सेमति आ जिंस. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ओके फर्स्ट आम डिफाइन करबे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऊपर. मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स. नॉन ये तीन प्रकार था है. फर्स्ट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड देन द हाइड्रोजन बॉन्डेड. ओके नॉन पोलर कंपोजिशन से तरह किछि पोलर नॉर्थ पोल साउथ पोल पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल सेमते किछि भी हबनी. नॉन पोलर ओके दीपटे सेम एटम रहबो से निजर फोर्स को कैंसिल करबे. आको गोटे स्मॉल डिपर्शन फोर्स रे थाए ताको कहंदी आमे लंडन फोर्स विषय आमे के पेपर छे क्लास 11th रे. हां with depression or London force works. Properties soft non-conductor insulators, very low melting point, usually liquids, gas at room temperature. Argon, helium, hydrogen, chlorine, iodine, solid CO2 or dry ice. ये सब आमर कौन पड़ा आसला ये सब हेला आमर नॉन पोलर. ओके CO2 काहे नॉन पोलर. दिस इज CO, the force opposite force cancel each other and this become non-polar. Same with polar molecular solid.
ओके एथरे गोटे गोटे साइड आमर गोटे आयन रहा आ गोटे साइड आमर आ गोटे चार्ज क्यारी करथिबो जेमति HCl व्हाई इट इज नॉट आयोनिक जेतबे ये एसिड के आम जान गोटे एसिड H+ दूची Cl- आयन से दूची तो से कौन पाई आमर आयोनिक हेलानी ये क्वेश्चन तुम मते डेफिनेटली आंसर करिया ट्राई करिवो सॉलिड SO2 NH3 ए सब कौन पळे आसले आमर पोलर पोलर कौन पाई कारण ना ए माने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ने थांती पॉजिटिव नेगेटिव रहे चार्ज से मानक ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डेड जिते बड़े हाइड्रोजन बॉन्ड करे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो आम कौन कहू हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ओके फॉर एग्जांपल H2O O H सहित से अच्छी ओके हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन तो ये गोटे है आमर हाइड्रोजन बॉन्डेड आयनिक सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को माने आयन्स माने तो मत कह NaCl ionic but HCl is not why it is not ionic कारण ये गोटे ना मेटल ना ये गोटे मेटल ना हो Na ओके constituent particles cations and anions binding force strong coulombic force एथरे थाए एथरे आ कुछ लंडन फंडन फोर्स न थाए कि कोवेलेंट फोर्स बॉन्ड से सब भावनी भांडरवाल फोर्स ए सब जमा न थाए एथरे कौन थाए आमर coulombic force or electrostatic force physical nature hard but brittle very high melting and boiling point ए माने molten state रे बहुत भलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करंती ओके किंतु जो हार्ड स्टेट्रे थे सॉलिड स्टेट्रे थे से एमानकर इलेक्ट्रॉन से फ्री न था मोबाइल मोबिलिटी से भितर न था दे आर नॉट मोबाइल तो से मूव एत करपारती कि मोल्टेन स्टेट आ लिक्विड स्टेट कि आक्वा स्टेट पड़गला से बहुत भलसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड मेटालिक सॉलिड्स एथरे कौन होता है ना देख ये गोटे मेटल आटम अच्छी तो चारिपटे ना इलेक्ट्रॉन्स थे पूरा चारिपटे चारिआडे 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 कौन थे ना इलेक्ट्रॉन्स पूरा सी है से चारिपटे इलेक्ट्रॉन थे से माने मूव करते चारिआडे आ सब आटम सेम थे फॉर एग्जांपल कपर आमर आमर गोल्ड सिल्वर ए सब positive ions kernels suspended in a sea delocalized electrons key characteristic high electrical अच्छा जानছো सबुठ भल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किए कर पारे आमर सिल्वर कंडक्ट कर पारे किंतु भाई ता कॉस्ट बहुत अधिक से आम ताको यूज करूना हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्लीमलेसली माने विदाउट प्रॉब्लम से माने बिना ट्रैफिक रे ही आमर चलती लुस्टर एंड कलर गोल्ड has luster we love it well आम से गोटे ऑर्नामेंट्स हिसाब से यूज करूँ सिल्वर को भी सेमती आम यूज करूँ मेकानिकल हाईली मेलेबल कैन बी बीटन इनटू शीट्स जहाँ तुम गोटे सीट्रे कन्वर्ट कर पार मेलेबल कहती एंड डक्टाइल मीन्स आम वायर ही कन्वर्ट कर पार सिल्वर वायर देखीच तारकसी कम देखीच तारकसी तार ही तो आगे बनाती सिल्वर को से डक्टाइल ओके कोवेलेंट नेटवर्क कोठी आसला जोटी कोवेलेंट बॉन्ड आमर रहा पार्टिकल्स एथरे कौन कॉन्स्टिट्यूएंट हुए एटम्स ओके एटम्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एंड द एटम्स ऑफ आवर कार्बन समथिंग बाइंडिंग फोर्स कोवेलेंटली बॉन्डिंग फॉर्मिंग जायंट मॉलिक्यूल्स डायमंड सेमती बहुत बड़ बड़ ग्राफाइट फेवरेट तो ग्राफाइट एग्जाम रे बाकी तमें डायमंड भी पढ़ bonds are strong and directional atoms are held very strongly at their position extremely hard to brittle extremely high melting points thermal भी बहुत बहुत भल से माने कंडक्ट करती extremely high melting points yes high melting point थाए insulator do not conduct electricity short range कर दिए फॉर एग्जाम्पल तुम पाखे आइस क्यूब अच्छी तुम पाखे गोटे ग्राफाइट
पूरा छुरी भाया किसी गोटे अच्छे तुम टीप धरल ताकू काटा गल से पूरा केक भाया ही कटि जाए जान कम बिकज ऑफ थर्मल एनर्जी तुम हाथर से थर्मल एनर्जी को से कंडक्ट कर पाए आइस पाखक आ से बहुत भलसे ही कटि जाए यहाँ गोटे नेचुरल फिनोमिना ए सब को जानिबा दरकार एग्जाम्पल डायमंड 3D नेटवर्क क्वार्ट्ज SiO2 सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम नाइट्राइड ए सबको तुमको जानवा गले कोभालेंट नेटवर्क सॉलिड से माने आर मोर एग्जांपल अछि NCERT रे जीव डिटेल रे पढ़ी दबो ऑलमोस्ट मैं सब एग्जांपल लिखि दीजिए आ तार स्ट्रक्चर एमती ही थाए द ग्राफाइट एग्जाम रे बहुत ही पसंद ग्राफाइट इज कोभालेंटली सॉलिड बट इट्स सॉफ्ट एंड ए गुड कंडक्टर कही graphite got a good conductor. Carbon atom in flat sp2 hexagonal layer each forms 3 covalent bond. Fourth is electron free. तो से थर्ड लेयर जो सरफेस ऊपर न रहेगी तार ऊपर लेयर ही रहे जमती से अन्य मान सहित इंटरैक्ट कर पार नेक्स्ट लेयर सहित 5 soft layers are held by weak van der Waals force and the slides each other makes excellent solid lubricant. Okay, master revision tips. Always check if the question specified solid state or molten state for ionic conductivity. Remember, graphite breaks the rule for covalent bonds. Okay, तो ये गोटे एक्सेप्शनल बिकज सी किसी ना किसी एक्सेप्शन तैयारी करे से जेरो भी यहाँ बहुत ही भल फेवरेट पीवाई कि डेफिनेटली कर आज तुम आम बॉन्ड नेचर जाए सारी देजे काली आम तुम डिफरेंट टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा एंड द ब्राभियस सिस्टम पढ़ा तापर से नेचर पढ़ा आमर मैग्नेटिक बिहेवियर हरिका कौन रोचे जमी आम जेई एडवांस एकदम ही भलसे सर ये आजिकार क्लास सर नेक्स्ट क्लास तुम जल्दी ही अपलोड हम से पर्यंत टिल वेट फॉर द क्लास थैंक यू सो मच।